Hi everyone and welcome back to my channel, and I'm going to teach you something about the medieval political thought or the western political thought, and most particularly the medieval times or the medieval age. So that was like basically I've told you before in my previous lecture that western philosophy or the western political thought is basically divided into three main eras. So that's the ancient era, the medieval era or middle times, and the modern times or the renaissance. There's another pronunciation to it, it's renaissance, and that is also known as the enlightenment era. So in this video we are going to study about the medieval philosophy, that what the medieval philosophy was about and what features were dominant in this during the medieval times. And we are also going to study about the two main philosophers, which were the Thomas Aquinas and St. Augustine. They were the two major philosophers of medieval times. Before starting the lecture, let me give you an insight of the medieval times. In one of my previous lectures, I have talked about the medieval or the Middle Ages, and the major topic I have covered is about the conflict between the state and the church, and we have studied the conciliar movement, and we have studied about the doctrine of two swords. So medieval times was dominated by the religion, because during this time there was no concept of logic, there was no concept of reason. ठीक है, so religion was playing a dominant role in this time. तो मोस्टली जो काम हुआ था, या मोस्टली जो मिडल टाइम्स में जो जिन चीज़ों का इन्फ्लुएंस था, दैट वाज द रिलीजन. ठीक है, उस टाइम पे जो फिलोसफर्स थे वो भी थियोलॉजियन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस राइटिंग्स उस टाइम पे हो रही थी. Everything that was happening during that time was about religion and the superiority of the church and the pope. Pope क्या होता है, जो चर्च का हेड होता है. And state was having an उसे क्या कहते हैं, subordinate role. उस टाइम पे कोई एज सच पॉलिटिकल पावर का कॉन्सेप्ट नहीं था. किंग को जो है साइडलाइन किया जा रहा था, एंड दैट द मेन पावर इज रिजाइडेड विद द पोप एंड द चर्च. प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने बताया हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ टू सॉर्ड्स, लाइक वन सॉर्ड वाज रेफरिंग टू द power of the church and the other sword was referring to the power of the king. ठीक है, तो that was like the religious affairs and the political affairs, and both were working or both are to work in harmonious relation for the growth of the people and state. So now we'll begin with our topic. So starting with the first topic of this video, this is about the medieval philosophy, and the first point is the scholasticism. So this was a major and a dominant philosophical method, क्योंकि इसके अंदर जो है ना फिर रीज़न और फेथ दोनों चीज़ों को जो है अटैच किया गया था. और इस जो स्कूल ऑफ थॉट से जो चीज़ें एसोसिएटेड हैं, इट इज़ थॉमस एक्विनस एंड एंसेलम ऑफ कैंटरबरी. एंसेलम ऑफ कैंटरबरी के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, विच वॉज रिगार्डिंग द मिडीवल टाइम्स. तो इसमें जो है रीज़न को यूज़ किया गया टू अंडरस्टैंड एंड डिफेंड द क्रिश्चियन थियोलॉजी. ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इज़ द ऑगस्टेनियनिज्म. सो his writings was in support to the church and with respect to theology, because he was of the view that church is having a dominant role over the state and all the political affairs. And one of his major and very prominent writings इसकी एक writing थी The City of God. और in that writing he basically talked about that church is dominant in every sphere. So whether it's spiritual, religious, political, economic, स्टार्ट में जब ऑगस्टाइन, क्योंकि ही इज़ नोन टू बी अ थियोलॉजियन, तो उसकी राइटिंग्स जो थी ना वो मोस्टली न्यू प्लाटोनिक और मतलब उसकी जो थी रिलीजियस और फेथ के ऊपर जो उसकी राइटिंग्स थी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे. लेकिन लेटर ऑन विद द टाइम ही ऑल्सो एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फेथ एंड द अथॉरिटी. ठीक है, and at the same time he believed in the supremacy of faith, and he was he basically thought that reason jo hai it can be used as a tool to support and better understand one's faith. So on one side when we say that he valued reason, so on the other hand he also and ultimately supported the authority of the church and the importance of faith in his theological writings. आगे जाके in the later slides we will again study about the Augustine, and in the later slide, in the last slide, we'll study about the Aquinas as well. So coming to the first point, that is the scholasticism. So this was a major and very prominent philosophical method, क्योंकि इसके अंदर जो है ना फिर रीज़न और फेथ दोनों चीज़ों को जो है अटैच किया गया था. और इस जो स्कूल ऑफ थॉट से जो चीज़ें एसोसिएटेड हैं, इट इज़ थॉमस एक्विनस एंड एंसेलम ऑफ कैंटरबरी. So whether it's spiritual, religious, political, economic,
medieval philosophy के बाद it's about medieval political thought, so everything related to politics and power and authority. So the first point is the divine rights of the king. So like medieval political theory, it is often justified the authority of monarchs by claiming that they rule by divine right, deriving their legitimacy from God, and this concept was particularly emphasized during this period. उस टाइम जो किंग्स अपनी पावर्स को डिराइव करते थे तो उनका ये मानना था कि हमारी जो पावर्स हैं या अथॉरिटी है वो डायरेक्ट गॉड से आती है हमारे पास, ठीक है। सो लाइक इट इज़ इनहेरेंट इन द नेचुरल लॉ that the rights are derived or the rights or the power is derived from directly from God to us. द सेकेंड पॉइंट इज़ फ्यूडलिज़म। तो उस टाइम पे जो है फिर फ्यूडलिज़म का कॉन्सेप्ट था, ये एक जागीरदार टाइप सिस्टम होता है एंड इसके अंदर ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर था जिसके अंदर ज़मीन दी जाती थी विद एक्सचेंज टू द मिलिट्री सर्विस, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज़ द पापल अथॉरिटी। तो जो पोप की जो पावर थी, तो मिडीवल टाइम्स में पोप के पास बहुत ज़्यादा पावर थी क्योंकि चर्च वॉज डोमिनेटिंग इन द पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल अफेयर्स बोथ। सो देयर वाज द इन्वेस्टिचर कंट्रोवर्सी जिसके अंदर फिर स्ट्रगल हुई फॉर द सुप्रीमेसी बिटवीन द चर्च एंड द सेक्युलर रूलर्स वर द की इश्यूज, ठीक है। सेक्युलर रूलर्स जो थे दे वर द किंग एंड द एम्परर्स एंड ऑन द अदर हैंड देयर वर द चर्च एंड पोप एंड देयर वाज अ स्ट्रगल एंड देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू फॉर द अटेनमेंट ऑफ पावर एंड लेजिटिमेसी ऑफ द अथॉरिटी कि किसके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। तो उस टाइम पे जो है दिस वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द चर्च। Natural law, Islamic and Jewish influence, and the conflict and synthesis. So natural law, it was mostly the subject and topic of Thomas Aquinas and other related philosophers because they have developed the idea of natural law, जिसके ऊपर इन्होंने कहा था कि कुछ moral principles हैं जो कि determine किए जाते हैं through reason, ठीक है। तो कुछ morality के principles हमें natural law सिखाता है। natural law कहाँ से आता है? divine laws से, ठीक है। मतलब inherent in the nature, जो हमारे हमें खुद ही से आता है, ठीक है। जैसे कि मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है गुड बैड, पॉजिटिव नेगेटिव, ईवल गुडनेस, इन चीज़ों का जो है मॉरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम रीज़न से डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट कुड बी डिटर्मिन्ड थ्रू रीज़न। अगर हमें पता लग रहा है कि कोई काम गलत है, सो दिस इज़ अ मॉरल प्रिंसिपल एंड वी आर यूजिंग अवर रीज़न फॉर इट, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसने फिर फिलोसफी और पॉलिटिकल थॉट को इन्फ्लुएंस किया एंड natural law was also playing a dominant role in the medieval times. फिर है इस्लामिक एंड ज्यूइश इन्फ्लुएंस। तो हमारे जो इस्लामिक फ़िलासफ़र्स हैं, जो इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट है जैसे कि इब्न सीना और इब्न रुश्द, और जो जूइश फ़िलासफ़र्स हैं जैसे कि मेमोनिडिस, इन्होंने जिनकी राइटिंग्स थी दैट वर मोस्टली ऑन मोरालिटी, एथिक्स, मेटाफिज़िक्स, पॉलिटिक्स, जी कि फिर इनकी राइटिंग्स ने इन्फ्लुएंस किया लेटर इन द यूरोपियन थॉट। अब जो कॉन्फ्लिक्ट और सिंथेसिस है, सो दिस आई कीप ऑन टॉकिंग again and again के it was a tension and a conflict between the religious and secular authorities for the power and that was a power struggle, power politics हो रही थी, ठीक है, between the state and the church, ठीक है। सो ये इन जो मोस्टली थॉमस एक्विनिस की राइटिंग्स में भी इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। So the second last slide is about the St. Augustine. He was the Augustine of Hippo and he's also known as the St. Augustine. When we study about his philosophy, that is about the Augustinianism. अच्छा, so he was a North African bishop. जो bishop जो होता है ना बेसिकली पोप होता है या एडमिनिस्ट्रेटर या डायरेक्टर, कोई हेड जो होता है। he was a philosopher, he was a theologian क्योंकि उनकी जो मेजर राइटिंग्स थी that was related to Christianity, church, Christian religion, ठीक है। He was one of the most significant figures in the early Christian church और जो कि he is also considered a foundational thinker for both Western Christianity and philosophy क्योंकि इनकी मेजर राइटिंग्स थी द सिटी ऑफ गॉड्स एंड अनदर राइटिंग वाज अबाउट द कन्फेशंस। थियोलॉजी के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है जो कि अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो उनकी फ़िलासफ़ी को रिफ़्लेक्ट करता है क्योंकि उन्होंने जो है चर्च की पावर को डिस्क्राइब किया है कि तो उनकी राइटिंग्स का जो है बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन थियोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जन एंड
ऑटोबायोग्राफी तो जो ऑगस्टाइन की राइटिंग थी कन्फेशन, जो कि इनकी पहला काम था, विच वाज रिलेटेड टू स्पिरिचुअल क्लासिक। तो इन्होंने जो है अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताया है कि उन्होंने कैसे क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्ट किया है, जो कि उनकी स्ट्रगल्स के बारे में बताता है, एंड स्ट्रगल्स विद द सिन एंड हिज इवेंचुअल कन्वर्जन्स। तो वो उनकी पर्सनल रिलीजियस एफिलिएशन के बारे में है ये जो कन्फेशंस है। और जो इनकी जो इन्फ्लुएंस इन राइटिंग्स का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा था ऑन द वेस्टर्न क्रिश्चियन थियोलॉजी, बाद में यूरोप में स्प्रेड हो गया था बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपनी राइटिंग्स के बारे में बताया है रिलेटेड टू सिन, ग्रेस, नेचर ऑफ गॉड। इनकी राइटिंग्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था ऑन द मिडीवल फ़िलासफ़ी, जो कि फिर एक मेजर स्कूल ऑफ थॉट बन गया था, ऑगस्टेनियनिज़्म और द ऑगस्टाइन ट्रेडिशन। Aquinas was an Italian philosopher. He was also a theologian और ये medieval period में जो थे dominant थे। He was a medieval era's philosopher and he's also known for his significant contributions to the scholasticism। ठीक है, scholarly काम इन्होंने किया था। Talking about the theology and philosophy, तो उनकी जो major writings थी सुम्मा theologica, जो कि क्रिश्चियन theology के ऊपर था, इन philosophy के ऊपर था। इन्होंने reason का यूज़ किया था to justify theology and Christian religion। क्रिश्चियन बिलीव्स को समझने के लिए इन्होंने इंटीग्रेट किया था एरिस्टोटेलियन फ़िलासफ़ी को। टॉकिंग अबाउट द नेचुरल लॉ, तो एक्विनस ने नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था और कहा था कि कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि नेचुरल लॉ से, नेचर से हमें मिलते हैं और वो डिटर्मिन किए जाते हैं थ्रू रीज़न। हम अपने रीज़न का इस्तेमाल करके मोरालिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। इसकी फ़िलासफ़ी ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था इन द मिडीवल टाइम्स। टॉकिंग अबाउट द सिंथेसिस, तो थॉमस एक्विनस का जो जितना भी काम था दैट वाज अ सिंथेसिस ऑन द फिलोसफर, जो कि एरिस्टोटल का जितना भी काम था विद रिस्पेक्ट टू क्रिश्चियन थियोलॉजी। और इसी तरह क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को मोर एसेसिबल किया गया था थ्रू द एक्सपैंडेड बिलीव्स एंड वर्क्स। एक्विनस के काम ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था कैथोलिक चर्च को। एक्विनस का जितना भी काम था उसी वजह से एक्विनस को आज तक डॉक्टर ऑफ द चर्च कहा जाता है। तो इसने जितना भी काम था क्लासिकल फ़िलासफ़ी और क्रिश्चियन फेथ के बीच में एक ब्रिज बनाया था टू ओवरकम द गैप बिटवीन दैट। So this was all from my side. So thank you for watching. Like, subscribe and share. Till then, take care. Bye.